ହେଇଗଲା ତ अर्पिता कृष्ण श्रद्धा किटू आशुतोष संध्या विश्वजीत देवाशीष चित्रसेन चिडू पंडा गायत्री सरस्वती देन सोनिया तृप्ति शुभश्री गुड इवनिंग एवरीवन। तो तुम मानक जमी कहला दैट इज आमर आज जूलोजी रो पार्ट 3 एंड टॉपिक तुम मैंने ऑलरेडी जानी सारिछ दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। आ क्वेश्चन गुड़ाक आई थिंक तुमको सब क्वेश्चन गुड़ाक आसो 100% आसो आ जो मैंने न आसो किसी भी हेले शिखिक जीव एमती ना कि खाली हाथ में फेरिकी जीव। तो दिया प्रिंस सागर तो जल्दी जल्दी शेयर करो एंड इमीडिएटली हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करा स्टार्ट कर दवा। ऑलरेडी 6टा 6 हेलानी। दीप्तिमयी जस्मिन एनएच पॉडकास्ट ब्रजेश एंड गुड इवनिंग अंकिता सुभद्रा दीप्ति गुड इवनिंग 68 वाचिंग। तो देन आम 80 प्लस हो गले सांगे सांगे आम स्टार्ट करिया। आ समाज खाई पी बसच तो पूरा अप्रोक्सीमेटली क्लास चलो भाविकी चलो 7टा भाया हो। तो घंटाटा जो मैंने खाई न से माने बिस्कुट बिस्कुट चा फा धरिकी बस एंड जो मैंने खाई सारिच से माने पानी बोतल पाखे धरिक बस एंड इमीडिएटली हम स्टार्ट करिया एंड मस्त मस्त क्वेश्चन करिया पूरा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एंड तुम भल लगे। ठीक अच्छे आज मिशन 100 ठीक अच्छे। जय श्री कृष्ण आमाजी कृष्ण को गोटे जय श्री कृष्ण कर एंड कृष्ण को ना रे क्लास स्टार्ट हो। विश्वजीत ओके आमाजी गुड इवनिंग प्रियंका गुड इवनिंग एवरीवन। आमरी पिला सब जॉइन हुआ धड़ा धड़ तापर हम स्टार्ट करिया पूरा मस्त मस्त क्वेश्चन करिया। अंजलि सर ऑलवेज वी आर रेडी। तुम आमरी स्टूडेंट ही रेडी होनी। देवाशीष सर 30टा क्वेश्चन सर 100% सर ग्यारंटी 30 कौन से क्वेश्चन क्वेश्चन को डिस्कशन करके हमें 50 प्लस क्वेश्चन करिया। देखियो गोटे क्वेश्चन को एनालिसिस करके तादरे केतरा केतरा क्वेश्चन हे परियो ताकू नै कि 50 क्वेश्चन होबो। 30 क्वेश्चन तो नॉर्मल। मोनालिसा गणेश एंड रेडी नमस्मिता गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ओके ठीक अच्छे। तो भाभी के चलो 70 दैट इज 50 प्लस क्वेश्चन हम करिया। दैट इज 30टा क्वेश्चन जस्ट हम खाली ब्लैक बोर्ड रे देखा जीवो बट ताकू एनालिसिस करी कि धरि कि चला 70 प्लस क्वेश्चन स्टार्ट करिया। समस्त खाली यस को देन इमीडिएटली स्टार्ट करिया। जय श्री कृष्ण सर रेडी हो चलियो तो 100% चलियो स्टार्ट करिया। ठीक अच्छे। फर्स्ट क्वेश्चन what percentage of ventricular filling is achieved by the atrial contraction? Atrial contraction द्वारा कितने % blood fill हुए to the ventricle? How much percentage of blood is filled to the ventricle by the atrial contraction? जल्दी जल्दी जो मैंने जॉइन नहीं नाती से मैंने जॉइन हो एंड 100 टारगेट तापर हम क्वेश्चन को पूरा धूला उड़ेगी करिया। फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने देखि पड़थिबो 30% निवेदिता इतने स्पीड जाउची निवेदिता सुप्रिया अमाजिंग शुभस्मिता कृष्ण ऑब्वियसली दैट इज आम जो देखिए 70% ब्लड पूरा मु तुम भल से आगु कही दैट इज 70% ब्लड फील हुए विदाउट एनी आर्टेरियल कंट्रैक्शन। 70% ब्लड फील हुए विदाउट एनी आर्टेरियल कंट्रैक्शन बट 30% ब्लड पूरा वेरी वेरी इंपोर्टेंट 30% ब्लड फील्ड बाय द आर्टेरियल कंट्रैक्शन। कस क्वेश्चन पूरा मन रख एंड बहुत थोड़ा एग्जाम रे पड़ी छेडी दैट इज 30% ब्लड फील्ड बाय द आर्टेरियल कंट्रैक्शन। तापर मते एठी गोटे आ गोटे क्वेश्चन को दैट इज सपोज दिस इज द हार्ट ऑफ मोनालिसा एंड राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल। तमे मते को दैट इज को चैम्बर राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल या भीतर को चैम्बर रो दैट इज स्पेस टा अधिका हम बा कहि पारे दैट इज सबुठारो बडो चैम्बर कोटा राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल व्हिच चैम्बर स्पेस इज मोर को कोन हो। देवाशीष स्वाति कल्याणी शुभस्मिता देवाशीष तृप्ति शुभस्मिता अंजलि लेफ्ट वेंट्रिकल परफेक्ट रेडी लेफ्ट वेंट्रिकल। देन मते को ट्राइकस्पिड वाल्व इज अदरवाइज कॉल्ड एज मिट्रल वाल्व राइट और रॉन्ग। Tricuspid valve is otherwise called as mitral valve right or wrong? 83 watching immediately हमर 100 होबो पूरा स्प्रिंट वेगर जिया। Tricuspid that is semilunar valve is otherwise called as right ventricle or tricuspid valve is otherwise called as mitral valve perfect right or wrong? Tricuspid valve is otherwise called as mitral valve आउथरे भाबी की को
ट्राइकस्पिड वाल्व को हमें मिट्रल वाल्व बोली कहे कि आउ थे को ट्राइकस्पिड वाल्व इज आल्सो नोन एज मिट्रल वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व को समस्ते कौन राइट कौन अरे ट्राइकस्पिड वाल्व इज अदरवाइज थोड़ी कह जाए दैट इज हमें जानि छे बाइकस्पिड वाल्व इज अदरवाइज कॉल्ड एज मिट्रल वाल्व बाइकस्पिड वाल्व इज अदरवाइज कॉल्ड एज मिट्रल वाल्व जो माने सब राइट देइचंदी तांको सब भिडी के आनी के माडो जो माने सब राइट रघुनाथ अर्चिता that is हमें कहि पिरा that is bicuspid valve is otherwise called as mitral valve and तुम मते को bicuspid valve टा लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल भितरे ना राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल भितरे कोन हबो bicuspid valve present between the right atrium and right ventricle or the left atrium and left ventricle अंकिता कृष्ण विश्वजीत रेडी चलिबो किछ नै अरे नॉर्मल यार मिस्टेक समस्त हुए मिस्टेक हबो कोन अछि तो मते को that is bicuspid valve or mitral valve is located between the right atrium right ventricle or the left atrium left ventricle perfect Monalisa Debasis Vishwajit left atrium left ventricle perfect next question chalo next question ji ready Gayatri Jagannath Swati Kalyani Anjali Ankita बढ़िया अनन्या प्रियंका दीपशिका देखो सेकंड क्वेश्चन समीक्षा 92 वाचिंग देखो तापरे इन ए सरफेस ECG the QRS complex represents आसीबो हमें जानि छे दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG रे QRS काहा को रिप्रेजेंट करूची एंड भलो से जानि छे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECG इलेक्ट्रो को आंसर कोन होबो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड आल्सो ग्राफ ताले हमें काहा कहया दैट इज एट्रियल QRS काहा को रिप्रेजेंट करूची QRS represents एटा जे कहइबो ताको संगे संगे गोटे चिकन रोल लिपिका वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन जे जण ठीक हेबो से जण गोटे चिकन रोल पर लिखि के रखो गारंटी तो कोन होला ना QRS काहा को रिप्रेजेंट करछि P Q R S and T and हम भल से जानि जे दैट इज P represents for the atrial contraction perfect atrial contraction and QRS represents ventricular contraction or ventricular depolarization and T represents for ventricular relaxation or that is ventricular diastole habo perfect ventricular polarization that is QRS ventricular depolarization or ventricular repolarization QRS कोन हबो के जनकर ठीक देखिया वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन जो मानकर आंसर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से मानकर ठीक है से मानको दैट इज मिलिबो हमरो चिकन रोल एंड जो मानकर भूल से माने जो मानकर ठीक है से मानको देबे चिकन रोल ताले आंसर दैट इज वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन ने फॉल से जानि छे इजीआर ECG रे P QRS एंड T ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एवेला करे जे P टा रिप्रेजेंट करे फॉर द एट्रियल कंट्रैक्शन बा दी पट साइड एट्रिया रे जो कंट्रैक्शन हुए दैट इज ताकू डिनोटेड बाय P and QRS टा होची ventricular contraction both right ventricle and left ventricular contraction is denoted by QRS and T represents for the ventricular relaxation or कहि परे that is ventricular repolarization ठीक अछि बुझियला विनय सरोज देवाशीष लक्ष्मी अनन्या अंकिता स्वाति विनय निशक शुभश्री गणेश दीप्तिमयी स्मृतिलेखा शुभश्री समीक्षा परफेक्ट दैट इज वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन रेडी तापर मते को अगेन मो ब्लैक बोर्ड आगे ठिया होची आउ थरे मते को T रिप्रेजेंट्स फॉर T का को रिप्रेजेंट्स करे अगेन आई एम आस्किंग द सेम क्वेश्चन T रिप्रेजेंट्स दैट इज वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन T का को रिप्रेजेंट करे तृप्ति अगेन आई एम आस्किंग द सेम क्वेश्चन T represents for ventricular depolarization or ventricular repolarization T का को रिप्रेजेंट करे को संग संग लिखो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन कृष्ण परफेक्ट वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन प्रिंस सागर परफेक्ट अंकिता परफेक्ट शुभश्री बढ़िया देवाशीष शुभश्री जेडा एंड ससदेव सत्यमजीत गायत्री चित्रसेन संध्या ब्रजेश सुप्रिया शुभश्री वॉइस ऑफ कृष्णा कल्याणी मोनालिसा परफेक्ट दैट इज T represents for the ventricular repolarization then चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3
द राइट एट्रिया ऑफ द ह्यूमन हार्ट रो राइट एट्रिया काहा को ब्लड को रिसीव करछि कोन अब आंसर वेंट्रिकुलर रिपोलेशन परफेक्ट चलो सेति गेला नेक्स्ट क्वेश्चन दियो क्वेश्चन नंबर 3 ठीक अछि अरे तुम मानकर सब रेडी तापर को क्वेश्चन नंबर 3 द राइट एट्रिया ऑफ द ह्यूमन हार्ट रिसीव ह्यूमन हार्ट रो राइट एट्रिया को ब्लड को रिसीव करछि राइट एट्रिया ऑफ सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट रो स्ट्रक्चर एबला नो द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इज जस्ट लाइक द क्लींस फिस्ट बा आंगुठी को एम्ति मुठा कले जो बला देखा जो से बला स्ट्रक्चर फॉर द बुझिया पय हमें सपोज ए बला स्ट्रक्चर कले एंड दिस इज राइट एट्रिया एंड दिस इज लेफ्ट एट्रिया राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल तो क्वेश्चन इज राइट एट्रिया को ब्लड को दैट इज गेन करिवो कोन कहया हमें राइट एट्रिया को को ब्लड जीवो एनीवन डीऑक्सीनेटेड ब्लड रघुनाथ सस्मिता लिपिका डीऑक्सीनेटेड ब्लड ब्रजेश डीऑक्सीनेटेड विनोद खाई पी के आसछ तो पूरा 100% क्वेश्चन गुडा को भलसे करिया पूरा तो आंसर इज दैट इज डीऑक्सीनेटेड ब्लड मस्त आ गोटे क्वेश्चन मु पचार तुमको देखो परफेक्ट समस्त रेडी क्वेश्चन टा सुनो क्वेश्चन होची दैट इज राइट वेंट्रिकल रु माय क्वेश्चन इज राइट वेंट्रिकल रु लंग्स को किए ब्लड ने की जाए पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन डोर्सल आउटा आ भीतर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैरी द ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स एंड अगेन आई एम सेइंग द ऑप्शंस आर दैट इज पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन एंड डोर्सल आउटा किए राइट वेंट्रिकल रु लंग्स को ब्लड नेकी जाउची सौम्य देवाशीष अंकिता समीक्षा ब्रजेश या परफेक्ट समस्त रेडी पल्मोनरी आर्टरी परफेक्ट अनन्या देवाशीष अंजलि दीप्तिमयी सोनिया निशांत गेमिंग गायत्री साहू लक्ष्मी पल्मोनरी आर्टरी वॉइस ऑफ कृष्णा स्वाति सत्यमजीत रेडी दैट इज पल्मोनरी आर्टरी carry the blood from the right ventricle to the lungs then again which blood vessel carry the blood from the left ventricle to the body parts को that is which of the following option ये blood को carry करछि from the left ventricle to the different parts of the body options pulmonary artery pulmonary vein dorsal aorta again को कोन हबो किए blood टा को left ventricle रु body रो different part को blood टा को नेकी जाय pulmonary artery pulmonary vein dorsal aorta same option कोन हबो जो मान तुम सांग माने जॉइन करने से माने जल्दी जल्दी शेयर करो एंड आंसर दियो देखो तुमको जोटा आछि तुम देखि दियो आ किए गोटे देला ए बोली तुम धड़ा धड़ ता पछ ए मारो बोली सिमते नाही pulmonary vein मु क्वेश्चन पचाली लेफ्ट वेंट्रिकल रु बॉडी रो डिफरेंट पार्ट्स को किए ब्लड नेकी जाउची ऑप्शन pulmonary artery pulmonary vein dorsal aorta again भाभी को कहार राइट फर्स्ट आंसर कहार देखिया आरुषि सॉरी देवाशीष आ पछ आंसर कहार ओ सॉरी रघुनाथ शुभस्मिता ताको पछु की अछंदी देन ताले शुभस्मिता रा बोधे फर्स्ट आंसर दैट इज डोर्सल आओटा ताले शुभस्मिता पई गोटे करताली करो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो डोर्सल आउटा ठीक अछि समस्त को बढ़िया अमेजिंग कृष्ण जय श्री कृष्ण शुभश्री शुभस्मिता अमेजिंग परफेक्ट ताले गोटे हमें पूरा स्ट्रिक्टली हम मन रखिया पड़िबो दैट इज हार्ट रो स्ट्रक्चर एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रिया की आनी के इंफीरियर वेना का सुपीरियर वेना का एंड कोरोनरी साइनस देन ट्राइकोस्पिड वाल्व कोटी बाइकोस्पिड वाल्व कोटी देन लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड टा लंग्स को जाउची थ्रू कोन पल्मोनरी आर्टरी ना पल्मोनरी वेन देन अगेन लेफ्ट वेंट्रिकल ले सब पूरा परफेक्टली मन रखो डीए हेबो सर विश्वजीत परफेक्ट डोर्सल आउटा रेडी then question number 4 the hepatic portal vein drains the blood to liver from hepatic portal vein that is heart ru blood नोची ना stomach रो नोची ना kidney रो नोची ना intestine नोची कोन अब आंसर देखिया कहार आंसर ठीक शुभस्मिता बढ़िया को श्रद्धा किटू स्वर्णलक्ष्मी that is hepatic portal vein drains the blood to liver from कोन हबो ऑप्शन डी परफेक्ट दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन देखो गोटे मस्त एग्जांपल दबार ए क्वेश्चन रो फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द सपोज आमे नबा विश्वजीत सपोज दिस इज द विश्वजीत रो इसोफेगस एंड दिस इज द स्टोमक एंड दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ विश्वजीत सो कोड गला विश्वजीत देन विश्वजीत सेठी
तो आमे विश्वजित कर इसोफेगस एंड दिस इज द स्टोमक ऑफ विश्वजित एंड दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ विश्वजित। फॉर एग्जांपल विश्वजित इज टेकिंग द पॉइजन, सो कौन सी कॉज रो धर पूरा पॉइजन टाकू इनटेक कराई बॉडी भीतर को किए लव वंस छाड़ी की जाईची या किछि भी हेची, तो विश्वजित कोन करछि ना सेही जगह रे किछि पॉइजन इनटेक करछि। देखो ए क्वेश्चन हमें कोन कहया, तो पॉइजन जेतले इनटेक करछि बा किछि भी जदि एक्सेस ग्लूकोज खाउछि बा एनी टाइप ऑफ जिंस खाउछि, तो हमें जानिछे तो फर्स्ट खाइबा हो किंबा से अल्कोहल हो किंबा से टॉक्सिक जिंस हो, इट विल go to the stomach, then it will go to the small intestine। कारण हमें जानिछे small intestine is the area where is the maximum digestion occurs, perfect। तो small intestine को जेतबेले आसी जाय इसु जिंस गुडा को, then before going to the heart, तो first blood कोडे जीवो ना, first जीवो liver को, very very important, liver को जीवो। जदी खाइबारे excess glucose अछि, then glucose will store in the form of glycogen। मते को किए कुहो ग्लूकोज मरीगला 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 ठू मरीगला, अरे देखो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजेन, इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कोन कहली ना हमें केमिति जानिया दैट इज ए कांसेप्ट कोन, सपोज हमें जहां भी जा खाउछो अल्कोहल पियो किबा एनी टाइप ऑफ जिंस आसो एक्सेस ग्लूकोज आसो जहां भी आसुची, तो से हार्ट को जीवा पूर्वरु आगो गोटे हेपाटिक पोर्टल वेन जे कोन करे ना हेपाटिक पोर्टल वेन टा कैरी करिवो, that is blood from the intestine, this portion is called as intestine। तो intestine रू liver को किए blood ने की जीवो hepatic portal vein। क्वेश्चन पचारची hepatic portal vein टा कोठु blood ने की जीवो, the answer is intestine to liver। then liver रे जदी excess glucose जने intake करची then glycogen form रे store होबो, जदी alcohol जाउची then alcohol रो detoxify होबो, तो ये सब जिंसो liver रे होबो, ठीक अछि। then answer is called as intestine। then again hepatic vein टा opening over to the inferior vena cava or the vena cava। then my question is can morigolo bo morigala re test series for OUT शिवांगी very soon test series तुम ପାଇଁ launch करा हबो। तो question होची देखो bile is stored in, bile टा कोठी स्टोर हुए, the storing organ of bile, bile टा कोठी स्टोर हुए, liver, pancreas, gallbladder। bile is stored in उत्तम, शुभश्री, प्रज्ञा, bile टा कोडी स्टोर हुए, bile is stored in which organ, that is gallbladder। शुभस्मिता फर्स्ट आंसर gallbladder। प्रथम तीनटा आंसर देखिया कहारे आछि, फर्स्ट आंसर दैट इज gallbladder। कृष्ण तमे सुनुचटी क्वेश्चन सुनुचटी रो रो कथा बुझा होछि तमरो, दैट इज gallbladder। फर्स्ट आंसर शुभस्मिता, then second answer देवीस्मिता, then third answer ब्रिजेश। तो शुभस्मिता, देवीस्मिता and ब्रिजेश, the answer is gallbladder। then I got a question, the life originate from the non living decaying matter बा ये जो पंको कादुओ ए सब रो लाइफ टा ओरिजिनेट है, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम द डिकाइंग मैटर, एटा को थ्योरी, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम द डिकाइंग मैटर को थ्योरी एटा को, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम द डिकाइंग मैटर और द नॉन लिविंग डिकाइंग मैटर, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉन लिविंग डिकाइंग मैटर को, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉन लिविंग डिकाइंग मैटर, बिरंची नारायण महंत अबायोजेनेसिस और द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, परफेक्ट पूरा नंबर 1 आंसर स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी और that is abiogenesis, perfect, ready। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो मु तुम कहिसली हमें जो भी करूचे क्वेश्चन 100% हमें प्रीवियसली जहा जहा क्वेश्चन करिया ऑलरेडी हमें इवोल्यूशन रो करि सारिचे, देन आल्सो हमें ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस रो करि सारिचे, एटा हमर थर्ड लेक्चर रे कोन दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो क्वेश्चन करिया मझिरे मझिरे जहा ले भी तुमको रिकॉल करिया अछि एंड तमर माइंड रे सेसु जिंस मन अछि ना नै ताको मन पकाय पे मझिरे मझिरे एंती गोटे क्वेश्चन आसीबो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ए डिक्रीज इन प्लाज्मा एल्बुमिन, प्लाज्मा रो एल्बुमिन रो कंटेंट जदी डिक्रीज होची ताहले कोन प्रॉब्लम होबो, प्लाज्मा रो एल्बुमिन रो कंटेंट जदी डिक्रीज होची ताहले कोन होबो, क्लॉट फॉर्मेशन होबो ना ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन होबो ना ऑस्मोटिक बैलेंस ना इम्यूनो फंक्शन, कोन होबो। फर्स्ट आंसर यार कहार देखिया, रुबिसा क्लॉट फॉर्मेशन, निशक ऑस्मोटिक बैलेंस।
केनटा करी हला सर आमे जानिचे देखो प्लाज्मा रे केते परसेंट प्रोटीन प्लाज्मा रे 90 रु 92% वाटर and 6 to 8% protein and what are the proteins गुडा सब कोन कोन that is first question amaro fibrinogen then second protein globulin then third one that is albumin fibrinogen no काम कोन clotting and coagulation blood clotting and coagulation globulin रहउची defense mechanism and albumin osmotic balance question पचारची osmotic balance और water balance albumin कोन होबो आंसर अभिषेक प्रज्ञा सुप्रिया निशांत गेमिंग इमोसर्स विनय अभिषेक आंसर कोन होबो ताले that is a c osmotic balance perfect fibrinogen for the clotting and coagulation globulin for the defense mechanism and albumin for the osmotic balance ready या पर क्वेश्चन टा समस्त रेडी रो या पर क्वेश्चन रे फास्ट आंसर जहार आसीबो 100% ताको एतरिबो पूरा ग्यारंटी ताको पूरा दिया हबो ता चॉइस रो खाया जहा ताको दिया हबो आसो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जी आंसर दबो ता चॉइस रो खाଇବା ताको पठिया हबो चलो क्वेश्चन नंबर 6 नेम ऑफ द ब्लड सेल्स whose reduction in number can cause the clotting disorder leading to excessive loss of the blood from the body कहारो that is reduction हेले blood clotting related problem face करियो देखिया फर्स्ट क्वेश्चन सारा मिछ कोंतनी देखो पूरा एटा सत किछि दिया होनी देखो नाटा पूरा मन रखिबे एंड दिया हो तुम देखो तमर कोन मन पसंद खाइबा मु देखुछि फर्स्ट क्वेश्चन आंसर किए दोछि फर्स्ट क्वेश्चन प्रभु आई थिंक प्रभु डी thrombocytes तो आई थिंक फर्स्ट आंसर प्रभु देन कृष्ण देन ब्रिजेश से है ना तो फर्स्ट आंसर आई थिंक प्रभु ठीक अछि ना मन रहला प्रभु ओके मिछ पूरा सत यार द नेम ऑफ द दैट इज thrombocytes हम जानि से दैट इज प्लेटलेट रो दैट इज जडी नंबर टा डिक्रीज हे जिवो ताहले क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हबो एंड द क्वेश्चन अच्छा मते को व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 150 150 200 250 केते व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी प्रभु सर दियंतु प्रियंका ना किछि दियाबनी सर दियाबो प्रभु प्रभु का ना पुनी ठाकुर का ना 100% दियाबो आसो देखाबो देखाबो दियाबो ताले कोन हैला कोन क्वेश्चन बचली द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डे देन तापर मते को कबर स्थान ऑफ आरबीसी आरबीसी रो कबर स्थान कोटा और द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी वॉइस ऑफ कृष्णा प्रियंका शुभस्मिता सोनिया विश्वजीत ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी लक्ष्मी गणेश देवीस्मिता सत्यमजीत ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कोटा ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कोन आंसर स्प्लीन परफेक्ट रेडी तापर मते को सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड हियर इज ऑक्सीजन एंड हियर इज कार्बन डाइऑक्साइड तो हीमोग्लोबिन टा काहा को बाइंडिंग करियो द बाइंडिंग एफिनिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन और टुवर्ड्स द कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर हीमोग्लोबिन रो बाइंडिंग एफिनिटी टा टुवर्ड्स द कार्बन डाइऑक्साइड और द टुवर्ड्स द ऑक्सीजन कोडी के अधिका मोर होबो ब्रिजेश फर्स्ट आंसर दैट इज टुवर्ड्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नेम व्हेन द हीमोग्लोबिन इज बाइंड विथ द कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्प्लेक्स रो ना कोन ऑप्शन ऑक्सी हीमोग्लोबिन ना दैट इज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन ना कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कोन होबो कार आंसर ठीक है हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से जतले बाइंड करे द कॉम्प्लेक्स रो ना कोन व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स व्हेन द हीमोग्लोबिन इज बाइंड टू द कार्बन डाइऑक्साइड कोन होबो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन देखिए फर्स्ट आंसर कार रघुनाथ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन परफेक्ट रेडी समस्त ठीक अछि सुनेलिका एंड सिमरन अंजलि रघुनाथ अनन्या ठीक अछि दैट इज हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड इज बाइंड हो दैट इज कॉल्ड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सेरम डिफर्स फ्रॉम द ब्लड केते बडे हमें सेरम कहया
serum differs from the blood. कौन हबो आंसर? Serum differs from the blood. Lacking globulin, lacking albumin, lacking clotting factors, ना lacking antibody. कौन हबो? कौन हबो आंसर? देखिए कहार ठीक होची. कौन हबो आंसर? Perfect. That is Mona Lisa. Biswajit lacks globulin. C lacks clotting factor. Yeah, perfect. Plasma without the clotting factor or plasma minus the clotting factor is called as serum. And next question, blood vessel भितरे blood टा clot हुए नि कौन पाई due to presence of option दोची. Blood does not clot inside the blood vessel due to presence of A रे दोची. Suppose globulin, option B heparin, option C histamine, option D that is albumin. तो ब्लड वेसल भितर ब्लड टा क्लॉट हुए नि कौन पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कौन अब आंसर? सरस्वती, अनन्या, अर्पिता, जस्मिन, रुबिसा, अंकिता. परफेक्ट. दैट इज हेपारिन. राइट. देन क्वेश्चन नंबर 8. Doctors use a stethoscope to hear the sounds produced during the each cardiac cycle. The second sound is heard when. आगो मते फास्ट कथा को त माने दैट इज केतेटा टाइप रो हार्ट साउंड फॉर्मेशन हुए लव एंड डब. तो क्वेश्चन पचारची कोन हबो? सी रघुनाथ. सी seminal valves close down after the blood from the vessel. Perfect. Answer is C. तो मते को फास्ट हार्ट साउंड कोटा लव और डब? फास्ट हार्ट साउंड लव और डब. प्रथम हार्ट साउंड के रुबिसा, तपस्विनी. फास्ट हार्ट साउंड के लव और डब. जे कहबो ताको गोटे ब्रिटानिया बिस्कुट. फास्ट हार्ट साउंड के ब्रिटानिया बिस्कुट चार मडी खाइबो. तो फास्ट हार्ट साउंड लव. परफेक्ट. एंड लव केतेबेले साउंड टा फॉर्मेशन हुए को द हार्ट साउंड लव केतेबेले फॉर्मेशन हुए? लव केतेबेले फॉर्मेशन हुए? हार्ट साउंड लव. 70 जण वाच करछो किंतु लाइक आछि 50. हाथ बोधे बिंधा होछि पिलांकर लाइक करिया पे हो. ठीक अछि. ओ द फर्स्ट हार्ट साउंड लव. सर खाइबा एग्जांपल closing the tricuspid valve and the bicuspid valve. When the tricuspid valve and the bicuspid valve close हुए सेतबेले the heart sound love is formed और love टा सुना जाए. and second heart sound dove जेतबेले semilunar valve close हुए. ठीक अछि. रेडी चलो. and I got a question. heart of heart. heart रो heart के heart of the heart is called as option heart of heart के SA note, AV note ना bundle of his. heart of heart के heart of heart के heart of heart के कौन हबो? SA node. Perfect. Then second question, pacemaker of heart. pacemaker of heart के SA node, AV node, bundle of his. same examples, sorry same option. pacemaker of heart के SA node. pace setter of heart के ठीक अछि. पेज सेक्टर के कोन हबो? देवाशीष, अंकिता, सुस्मिता, विनय, जेडी, स्नेहा, पल्लवी, सबर, सुधांशु, सॉरी सदा, किट्टू, प्रियंका, संध्या, शुभस्मिता, जस्मिन, लिपिका, अलिभा, समीक्षा. दैट इज पेज सेक्टर ऑफ हार्ट एबी नोड. ओके ठीक अछि. देन आ गोटे क्वेश्चन देखिया करिया के जण को आसुची. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B12? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B12? ऑप्शन दोची थियामिन, बी ऑप्शन रिबोफ्लाविन, सी ऑप्शन कोबालामाइन, डी ऑप्शन फोलिक एसिड. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B12? कोबालामाइन. परफेक्ट. देन मते को गोटे ऑप्शन दोची 1 मिनिट.
which cell release pepsin? Option 1, sorry, question टा होची which cell release the that is release the intrinsic factor? Option 1, peptic cell. Option B, oxyntic cell. Option C, that is mucous neck cell. And option D, तीनटा ऑप्शन दियो कौन हबो को सेल रिलीज करे दैट इज इंट्रिंसिक फैक्टर? शुभस्मिता ठीक अछि, दैट इज ऑक्जिंटिक सेल और द पैरेटल सेल इज रिलीज इंट्रिंसिक फैक्टर. परफेक्ट, रेडी. बढ़िया पिला हमर सब पैरेटल सेल दैट इज अक्सा मुस्कान. प्रभु जय प्रभु. अंकिता, प्रत्युष, प्रियंका, अर्पिता, अनन्या, शशिरेखा, सौम्या, कल्याणी, ओम प्रकाश, लक्ष्मी, पैरेटल सेल और ऑक्जिंटिक सेल. गणेश, ओलिवा. इंट्रिंसिक फैक्टर टा होची के? इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिलीज फ्रॉम द पैरेटल सेल और ऑक्जिंटिक सेल व्हिच इज located in the gastric gland, and gastric gland is located in the mucosa layer. तो एक्सटेंसिव फैक्टर होची विटामिन B12. एक्सटेंसिव फैक्टर विटामिन B12 रो एब्जॉर्प्शन पाई हेल्पफुल किए इंट्रिंसिक फैक्टर, एंड इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिलीज फ्रॉम द पैरेटल सेल और द ऑक्जिंटिक सेल. तापरे नेक्स्ट कथा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 9. The diagram given here is the standard ECG of a normal person. The P wave represents. P wave कहा को represent करूची? कौन होगा आंसर? कौन होगा आंसर? यही क्वेश्चन टा जे दबो ताको गोटे गोटा कुकुड़ा दिया हो, से कुकुड़ा फड़िया को नहीं गिरी पोड़ी गिरी खाइयो. कौन होगा आंसर? The diagram given here is the standard ECG of a normal person. The P wave represents. गोटा गोटा दिया होनी, पशु हत्या भारी खराब कुहाला ना. सतरे कोन दिया होची गोटा गोटा कंट्राक्शन ऑफ आट्रिया. पी वेव काहा को रिप्रेजेंट? ए क्वेश्चन त हमें करले पूरा पानी करी के मन रखियो. पी वेव काहा को रिप्रेजेंट करछि? क्यू काहा को, क्यूआरएस काहा को रिप्रेजेंट करछि? टी रिप्रेजेंट. सेम क्वेश्चन. पी वेव रिप्रेजेंट्स द contraction of both atria. Ready? गायत्री, गायत्री, गायत्री मंत्र बोलो. चंद्रकांति पृष्टि, रघुनाथ सर एटा जाली, विनय जोशी ए. तापर मते को देन बंडल ऑफ इज ए पार्ट ऑफ. ये बहुत हार्ड क्वेश्चन. इतने हार्ड क्वेश्चन. ए क्वेश्चन ता जरा भूल हो ताको प्राइज दिया हो. बंडल ऑफ इज ए पार्ट ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमंस? ब्रिजेश रेडी. रेडी सर. हाउ आर यू सर? सत्यमजीत, आई एम फाइन एंड यू? लिपिका, मिस्टर सत्य, हार्ट. हाँ, PQRST हमें पढ़िले कि दैट इज ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ गोटे मेसिन टा लागे. कौन हुए ना तमर दैट इज हार्ट रो ए जो इंपल्स गुडा को देखिया पे मापिया पे. तो PQRST रे डिनोट करा जाय. आको मपा जाय कोन ना गोटे होची देखा जीवो लेफ्ट रिस्ट रे, एंड अनदर वन तीनटा इलेक्ट्रिकल दरकार. फर्स्ट कथा ECG जो इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तीनटा इलेक्ट्रिकल कॉर्ड अकॉर्डिंग टू NCERT. 3 इलेक्ट्रिकल कॉर्ड. तीनटा इलेक्ट्रिकल रे गोटे इलेक्ट्रिकल कॉर्ड लागिवो लेफ्ट रिस्ट, एंड तम रिस्ट रे लागिवो गोटे, आ गोटे लागिवो तमरो राइट रिस्ट. बा हाथ रे गोटे रिस्ट, रा हाथ रे रिस्ट रे गोटे, आ गोटे लागिवो दैट इज आ गोटे इलेक्ट्रिकल कॉर्ड लागिवो लेफ्ट एंकल. तो एथिरे तमरो जणा पड़ जिवो. देखिनो तम मूवी रे दैट इज जो पिप 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 ए के पूरा हो जाए. जो मूवी रे सब एम चलतो पिप 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 एमती समान हे जो माने प्रॉब्लम. तो ताकू नै करी करा जाय पी. रो गोटे मिनिट 1 सेकंड एटा दे भल से कर दवा. PQRST जने पचाले तो सेति में अगेन एटा करिया. ये तो कथा हो PQRST. P टा for the depolarization of atria, and QRS टा होची depolarization of ventricle, and T टा होची repolarization of ventricle. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन.
Examination of a blood of a person पढ़िकरी कुह कौन हम 71 watching आउ सब पिला कुआडे गले हमरो आउ सब पिला मते निद लागिला बोधे examination of a blood of a person suspected of having anemia that is so large immature nucleated erythrocyte without hemoglobin ताहले ता डाइट रे को सप्लीमेंट रो प्रॉब्लम अछि कोन हबो समस्ते केमिति अछ रघुनाथ शुभम folic acid and cobalamin then ठीक ठीक perfect that is folic acid and cobalamin folic acid को विटामिन को folic acid हम कहूचे आंसर इज folic acid and cobalamin हम तो जानि जे cobalamin होची विटामिन B12 and folic acid को विटामिन anyone what is the को विटामिन को हमें folic acid कहूची को कहा को हमें folic acid बोली कहूची विटामिन B9 लिपिका and इमोसर्स विटामिन B9 ताले मते को जो साइट रे जो लीफ रो साइट रे बेले बेले घा भले हो जायनी हमें केलियोसिस बोली कहूचे एपट साइट रे एपट लीफ रे केलियोसिस को विटामिन रो डेफिशिएंसी हेले ऑप्शन दोउची विटामिन B1 विटामिन B2 विटामिन C विटामिन D कहार डेफिशिएंसी हेले केलियोसिस कहार डेफिशिएंसी हेले केलियोसिस हो एंड केलियोसिस जोडा देखा जाय ने करपर रे जो घा हे गला बलिया छिंडी गला बलिया कोडा विटामिन B1 डेफिशिएंसी वेरी आउ थे भाबी को दीपशिका रघुनाथ विटामिन D लिपिका विटामिन D डेफिशिएंसी दैट इज रिकेट्स और ओस्टियोमालेसिया गोड़ बंका हे गला बले देखा जाय छुआ मान कर विटामिन B2 आंसर केलियोसिस विटामिन B2 deficiency विटामिन B12 is otherwise called as riboflavin and the deficiency of riboflavin can cause the केलियोसिस तुम देखि परथियो रो गोटे सेकंड रे तुम देखौछि केलियोसिस 1 मिनिट केलियोसिस देखो एटा तुम देखा होती बोधे दिस इज द डिसऑर्डर केलियोसिस साइड गुडा पूरा घा हे जिवो यू कैन सी हियर केलियोसिस ठीक अछि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा ए को नै के आ गोटे क्वेश्चन तुम पचरा जिवो वेरी को विटामिन डेफिशिएंसी which vitamin deficiency can cause the disease very को विटामिन डेफिशिएंसी कोन आंसर वेरी को विटामिन डेफिशिएंसी हेले वेरी हबो वेरी को विटामिन डेफिशिएंसी वेरी आंसर कोन हबो आंसर तापरे आ गोटे क्वेश्चन पचरा हबो लिपिका जो कहले विटामिन डी लिपिका तम पई स्पेशल क्वेश्चन दैट इज विटामिन डी रो अदर नेम कोन व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन डी आंसर इज विटामिन B1 परफेक्ट विटामिन B1 शुभश्री देवाशीष आका अनित श्रद्धा किटू एंड सुप्रिया शुभश्री सूरज शुभश्री मोनालिसा एंड प्रियंका प्रियदर्शिनी ब्रिजेश तृप्ति मोनालिसा शुभस्मिता लिपिका कैल्सीफेरल परफेक्ट कृष्णा परफेक्ट कैल्सीफेरल विटामिन डी अदर नेम दैट इज कैल्सीफेरल परफेक्ट बढ़िया कैल्सीफेरल रेडी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हां बढ़िया क्वेश्चन एउठो जदि ऑप्शन ए को नै की करिया व्हाट इज द थियामिन इज अदरवाइज कॉल्ड एज थियामिन कोन हबो कैल्सीफेरल चंद्रकांति तपस्विनी विक्रम सर विक्रम प्रसाद अरे विक्रम कैल्सीफेरल वॉइस ऑफ कृष्णा तो आंसर कौन हबो थियामिन इज अदरवाइज कॉल्ड एज विटामिन B1 B2 विटामिन D विटामिन C व्हाट इज योर आंसर व्हाट द अदर नेम ऑफ थियामिन कैल्सीफेरल विटामिन
What is the other name of thiamine? Vitamin B1. Satyamjit, thiamine is called as vitamin B1. Ready? Riboflavin is vitamin B2 and folic acid vitamin B9 and cobalamin is vitamin B12. Ready? Chalo next question. The person with blood group AB is considered as universal recipients. कौन हम आंसर? सुप्रिया, शुभस्मिता, चंद्रकांति कौन हम? स्वयं कौन हम यार आंसर? That is what is the answer of question number 12? Person with blood group AB is considered as universal recipients because AB blood group रो लोक मानक आमे universal recipients कहया कौन पाई? कौन पाई कहया? किस तो गोटे कारण थियो बोल तो कहया ना universal recipients. A, the both A and B antigen on RBC and no antibody in the plasma. Both A and B antibody in the plasma. Answer कौन होबो? लिपिका, perfect, बढ़िया answer. That is answer question number 12 रे answer होबो कौन? ना A. Ready? आ गोटे question मु तुम कहिबे एठी. आमे that is antigen. मो question टा सुनो. Antigen कोठी present थाए? Antigen present on surface of option A, surface of RBC, surface of WBC, surface of platelet. Where is the antigen is present? Surface of hemocytes, surface of RBC. Ankita, Devasis, yeah, right? Surface of RBC. अच्छा, फॉर एग्जांपल धर गोटे ए ब्लड ग्रुप रो कौन सी कॉज रो ए ब्लड ग्रुप रो पेशेंट को ब्लड दरकार. फॉर एग्जांपल आमे जण को टेक करिया स्वयं. धर स्वयं रो ब्लड ग्रुप ए एंड ए ब्लड ग्रुप को जदि ब्लड रिक्वायर अछि ताले को ब्लड ग्रुप को देई परिबे? ए ना बी ना ए बी ना ओ किए दैट इज ए ब्लड ग्रुप रो पेशेंट को ब्लड देई परिबे. कौन हम आग तो स्वयं एग्जांपल दिया माने स्वयं को ही दबा पड़ो. गोपशिला, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग गोपशिला. अंकिता, सुरोज, सुप्रिया, देवस्मिता, आकाश. ए एंड ओ परफेक्ट. जदि गोटे ए ब्लड ग्रुप रो पेशेंट को ब्लड दरकार होची देन he or she can receive the blood group from the A and O. A थ्रू ब्लड आनी परिबो एंड आल्सो O थ्रू भी आनी परिबो. ठीक अछि, बढ़िया. यूनिवर्सल डोनर किए? यूनिवर्सल डोनर ऑप्शन यूनिवर्सल डोनर ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव. यूनिवर्सल डोनर कहा हुआ है? ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव. कौन आंसर? प्रियंका, गायत्री, ओ ए एंड ओ. ठीक अछि, वर्तमान यार आंसर दियो. यूनिवर्सल डोनर कहा हुआ है? ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव. कौन आंसर? ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव. आंसर कौन हो? ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव. What is the answer of question number 12? O positive or O negative? O negative. Raghunath, O positive. Universal donor is O negative. O negative. Perfect. Lakshmi, O negative. निशक ओ नेगेटिव. अच्छा, आ गोटे कथा लाइफ ओरिजिनेट. हां, आ गोटे इंपोर्टेंट पूरा दैट इज मिलर को जो एक्सपेरिमेंट थिला. मिलर को जो एक्सपेरिमेंट थिला सेतरे को अमीनो एसिड रिलीज हेतिला. ए क्वेश्चन आमे जतोळे इवोल्यूशन चैप्टर करथिले से क्वेश्चन ऑलरेडी करि सारछे. तो देखिया कार मन अछि मिलर को एक्सपेरिमेंट रे से कोन अमीनो एसिड पाइथिले. ऑप्शन दोची ना ऑप्शन नो को डायरेक्ट. मिलर को एक्सपेरिमेंट रे से कोन अमीनो एसिड पाइथिले? परफेक्ट. हमर रेडी बढ़िया पिला हमर आगा. अलानाइन, ग्लाइसिन, एस्पेरेटिक एसिड. अलानाइन, ग्लाइसिन एंड एस्पेरेटिक एसिड तीनटा अमीनो एसिड पाइथिले. दैट इज मिलर को एक्सपेरिमेंट रे. देन दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर बा तो थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज. जो ऑर्गन को हमें मैक्सिमम यूज करछे से नेक्स्ट जनरेशन जीवो. ए थ्योरी के देथिले? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के देथिले?
कौन आंसर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर देखिए के जण आंसर दोछन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किए देथिले इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कौन हबो कहार ठीक होची देखिया इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कौन आंसर लामार्क फास्ट आंसर कहार देखिया लामार्क टा फर्स्ट आंसर दैट इज बिरंची नारायण महंत सॉरी गायत्री दैट इज सत्यम तुम डार्विन कहिचो बट नो बट आंसर इज दैट इज लामार्क देन नेचुरल सिलेक्शन किए देथिले नेचुरल सिलेक्शन देथिले दैट इज डार्विन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन adult human RBC are enucleate which of the following statement is your most appropriate explanation of this feature कौन हबो लामार्क डार्विन चिन्नु प्रभा लक्ष्मी लिपिका चार्ल्स डार्विन बढ़िया ये क्वेश्चन टा सरी गला परे गोटे रैपिड फायर करिया जस्ट 2 मिनिट रैपिड फायर करिया देखिया केते कोन मन अछि प्रीवियस चैप्टर को नेकी सेही डाइजेशन एंड ब्रीथिंग एंड एटा जहा पढिले आकु नेकी जस्ट गोटे रैपिड फायर करिया देखिया के जनकर कोन मन अछि एंड मन थिबो जस्ट गोटे करिया एंड तमरो माइंड टा वाश हे जिवो एक्सरसाइज भी हे जिवो जो जिंस भूली जाइछो अगेन रिकॉल हे जिवो तो कोन बा आंसर adult human RBC is enucleate which of the following statement is most appropriate explanation of this feature रविनंदन बैडा तृप्ति अंकिता कौन हबो वॉइस ऑफ कृष्णा डी their internal space is available for the oxygen perfect that is their internal space is available for the oxygen option number D perfect ready तापर मते को that is जदि हम गोटे ऑर्डर देखिया कोठी मैक्सिमम प्रेशर अराइज होची जदि हम देखिया टोटली परे राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल या भितरु मैक्सिमम प्रेशर को दैट इज को चैम्बर रे अराइज होची और मैक्सिमम प्रेशर को चैम्बर रे पड़ुची राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल तो मैक्सिमम प्रेशर कहा पर पड़ुची आंसर कोन हबो फर्स्ट आंसर कहारो 13 नंबर डी फर्स्ट आंसर दैट इज ब्रिजेस that is left ventricle perfect left ventricle then second question the both side atria are separated by interarterial septum or interventricular septum the both side atria or the right atria and the left atria are separated by interarterial septum or interventricular septum kon hobo the both side atria or the right atria and the left atria are separated by which septum interarterial septum or interventricular septum voice of krishna IAS interarterial septum सुनेलिका मोनालिसा दीप्तिमय सुप्रिया जस्मिन समीक्षा लक्ष्मी अंकिता दीपशिका अर्पिता interarterial septum रघुनाथ interarterial IAS एते काहे लिखुजो आईएस तो लिखि देले संगे संगे हम धरिबो इंटरआर्टेरियल सेप्टम रेडी इंटरआर्टेरियल सेप्टम अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन तो जदि हमें आर्टरिया एंड वेंट्रिकल को सेपरेट करिया गोटे हार्ट रो आर्टरिया एंड वेंट्रिकल इज सेपरेटेड बाय ए जो सेप्टम रो ना कोन ऑप्शन इंटरआर्टेरियल सेप्टम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ना आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम दैट इज आर्टरिया एंड वेंट्रिकल इज सेपरेटेड बाय कोन आंसर सुभद्रा प्रियंका आर्टरिया एंड वेंट्रिकल सेपरेटेड बाय ये तो गला गोटे पट साइड आर्टरिया बा राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया सेपरेटेड बाय इंटरआर्टेरियल सेप्टम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेटेड बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम देन जदि पचारे दैट इज आर्टरिया एंड वेंट्रिकल सेपरेटेड बाय कोन हो आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम परफेक्ट दैट इज आंसर इज आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 one of the common symptoms observed people infected with dengue fever dengue द्वारा affected person मान केस रे कोन हो significant decrease in RBC decrease in WBC decrease in platelet and increase of platelet dengue patient मान केस रे कोन हो what is the perfect answer dengue disease रे कोन हो
आंसर कौन हम डेंगू भाइरस DENV आंसर कौन हम दैट इज प्लेटलेट काउंट इंक्रीज और डिक्रीज क्वेश्चन नंबर स्वयं डिक्रीज इन RBC डिक्रीज इन RBC significant decrease WBC significant decrease in platelet increase in platelet कार आंसर देखिए ठीक अछि अंकिता ठीक अछि लिपिका decrease in platelet perfect the answer is decrease in platelet then question number 15 ECG the depolarization and the repolarization process during the cardiac cycle in the ECG of a normal healthy individual one of the following OFs is not represented but that is ECG रे अभी तो को ऑप्शन टा डिनोट करेनी कौन अब आंसर को ऑप्शन टा ECG टा ताकू डिनोट करेनी शुभश्री सुस्मिता प्रियंका that is depolarization of atria repolarization of atria depolarization of ventricle repolarization देखो इजी क्वेश्चन यार एटा हम 5 थर गलणी that is P Q R S T एंड हम पूरा भलो से जानि छे that is P का को रिप्रेजेंट करे Q R S का को रिप्रेजेंट करे T का को रिप्रेजेंट करे आ ता बाद तो पचार छी कोटा को रिप्रेजेंट करेनी नॉट रिप्रेजेंटेड ताले कोन आंसर that is अंकिता B स्वयं B हमें जानी चाहिए that is P denotes for the depolarization of atria or the contraction of atria ठीक अछि and QRS denoted for the depolarization of ventricle भी होबो and T represents for the repolarization of ventricle होबो तो आंसर इज repolarization of atria एटा ही होबोनी हो देखिया किए कहिला आंसर जोटा कोन ना 15C depolarization of ventricle अरे पचार छिबा कोटा रिप्रेजेंट करेनी P QRS T P तो that is atrial contraction or the depolarization of atria QRS तो depolarization of ventricle and T तो repolarization of ventricle और repolarization of atria तो कोठ नहीं बुला मो आंसर कहूची मो ओम प्रकाश B चंद्रकांति पृष्टि B परफेक्ट अनन्या B जो माने का आंसर B से माने पूरा कस आंसर सत्यमजीत विश्वजीत बस रेडी बर्तमान पे तमर ये रहला 15 क्वेश्चन या पर दिटा जो क्वेश्चन अछि आई थिंक 16 एंड 17 ए दिटा क्वेश्चन तमर होमवर्क रहइबो क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17 ए दिटा क्वेश्चन को तमे कमेंट रे जणाओ एंड जहार आंसर ठीक हेबो ताकू पूरा गोटे गामुछा धोती आ जे बला मानको ड्रेस पूरा ऑनलाइन रे तम घर को जाई पहुंचिबो तो 16 नंबर एंड 17 नंबर कमेंट रे जणेबो देन आमे टिके प्रीवियस रे डिस्कशन करिया फर्स्ट क्वेश्चन होची दैट इज ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन बा जेतोळ आमे इंस्पिरेशन होचे द प्रेशर विद इन द लंग्स भीतर प्रेशर टा एटमॉस्फेयर प्रेशर थारु अधिका और लो और हाई ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन अगेन क्वेश्चन ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन द प्रेशर विद इन द लंग्स और इट इज कॉल्ड एज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर is higher than the atmosphere pressure or the lower than the atmosphere pressure कोन आंसर खाली मिछ किछि दिया होनी करी देखो जदि न दिया हो ताले कहयो तो प्रेशर विद इन द लंग्स और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर परफेक्ट आंसर इज लो एंड आई वुड क्वेश्चन हिमो ड्यूरिंग द एट द alveolar portion रे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जेतोले बाइंड करे सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ alveoli and this is the blood vessel during the binding of hemoglobin with the oxygen partial pressure of oxygen and partial pressure of carbon dioxide आ भितर कोटा इंक्रीज होबो एंड कोटा डिक्रीज होबो alveoli साइट रे जेतबळे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंडिंग करिवो और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होबो सेतबळे partial pressure of oxygen and partial of carbon dioxide कोन होबो इंक्रीज ना डिक्रीज खाली भाबी दियो फर्स्ट ऑप्शन अछि partial pressure oxygen and second is partial carbon increase decrease na decrease increase just खाली increase decrease कहले जाना पड़ जो oxygen is high partial pressure increase right ankita oxygen increase Vishwajit yes ankita oxygen pressure is high and carbon dioxide pressure is decrease बढ़िया the partial pressure of oxygen is increase and partial pressure of carbon dioxide is decrease then I got a question during the inspiration जेतोले pulmonary pressure or the intrapulmonary pressure or the pressure within the lungs जेतोले increase होबो वॉल्यूम कोन होबो अच्छा व्हाट इज बॉयल्स लॉ आगो फर्स्ट को व्हाट इज बॉयल्स लॉ
बॉयज लॉ टा प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम कोन हबो आगो बॉयज लॉ को तापर हम क्वेश्चन पचारिया प्रेशर टा लंग्स भीतर कमिले वॉल्यूम कोन हबो आगो को व्हाट इज बॉयज लॉ प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इंक्रीज दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाई ऑक्सीजन एंड लो CO2 परफेक्ट उतेशना कविता कल्याणी प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज बढ़िया से क्वेश्चन छाड़ो एटा तापर देखो बॉयज लॉ कोन पार्शियल दैट इज प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रघुनाथ प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ताहले ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन जेतले प्रेशर विदिन द लंग्स टा डिक्रीज हबो तो सेतले वॉल्यूम टा कोन हबो या तो प्रेशर जेतले कमिबो वॉल्यूम टा बढ़िबो तापर मते को केतेटा लेयर दे के अल्वेओली आ ब्लड वेसल भितरे डिफ्यूजन हुए केतेटा लेयर दे के अल्वेओली एंड ब्लड वेसल भितरे डिफ्यूजन हुए एंड से लेयर सो ना कोन फर्स्ट क्वेश्चन केतेटा लेयर दे के डिफ्यूजन हुए 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर कोन आंसर इंक्रीज इनवर्सली समीक्षा रविनंदन शुभस्मिता अंकिता स्वयं जस्मिन विश्वजीत रघुनाथ लिपिका तो ड्यूरिंग द gaseous exchange between the alveoli and the blood vessel how many layers are directly involved in the diffusion of gas केतरा layer 3 layer and what are the layers रो ना सब कोन squamous epithelium of alveoli then endothelium of blood vessel and then basement membrane between them ठीक अछि रेडी गोटे नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल रो ब्लड प्रेशर केते नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल रो ब्लड प्रेशर केते ऑप्शन 1 120/80 एंड ऑप्शन बी 140/90 ऑप्शन सी 160/180 एंड ऑप्शन डी 2000/5000 2000/5000 नॉर्मल ब्लड प्रेशर आंसर कोन हो अंकिता squamous शुभस्मिता squamous epithelium of alveolus basement membrane and endothelium blood vessel देबाकू परफेक्ट रेडी 120/80 रेडी परफेक्ट एंड क्वेश्चन होची गोटे रिलेशन कोची आ भीतर कोटा ठीक कार्डियक आउटपुट इज सर आपन करे ना क्लास अछि लाइव केतरा रे 90 कार्डियक आउटपुट equal to stroke volume into heart rate ना stroke volume minus heart rate ना stroke volume divide by heart rate तो cardiac output कौन stroke volume into heart rate ना stroke volume minus heart rate ना stroke volume divide by heart rate अर्पिता शशिरेखा ओम प्रकाश सुस्मिता कविता that is stroke volume into heart rate perfect नॉर्मल हार्ट बीट पर मिनिट केते 60 और 70 और 95 और 12 to 16 केते हार्ट बीट पर मिनिट द नॉर्मल हार्ट बीट केते 70 60 72 95 12 to 16 स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट परफेक्ट लिपिका स्वयं 72 रेडी then the alveolar layer get decreased due to the cigarette smoking the disease is called as asthma or the emphysema the alveolar layer get decreased due to the cigarette smoking the disease is called as asthma or the emphysema कोन हो धड़ा धड़ फास्ट आंसर कहार आसी देखिया फास्ट आंसर जार हो ताको डाकी गोटे तार गोटे फोटो शूट हो मस्त फोटो शूट फास्ट आंसर कहार देखिया दैट इज स्वयं स्वयं रो फोटो शूट हैला स्वयं हैला फोटो शूट हैला स्वयं रो एम्फाइसिमा दैट इज एम्फाइसिमा परफेक्ट रेडी तापर नेक्स्ट आउ थरे बेरी इज कॉज्ड बाय बेरी का रहे को विटामिन B1 विटामिन B2 विटामिन D
बेरी इज कॉज्ड बाय एटा देखिया कार फर्स्ट आंसर जे थरे विनर हेछि ताको विनर करावन बेरी इज कॉज्ड बाय द डिजीज बेरी इज कॉज्ड बाय व्हिच विटामिन विटामिन B1 विटामिन B2 विटामिन D विटामिन एटे शुभस्मिता विटामिन बी इनवैलिड विटामिन को विटामिन बी तो बहुत विटामिन अछि इमो शॉर्ट्स द फर्स्ट आंसर इमो शॉर्ट्स दैट इज विटामिन B1 परफेक्ट देन जेरोथैलामिया इज डिजीज कॉज्ड बाय व्हिच विटामिन ताले ए क्वेश्चन आंसर कहार हला सॉरी इमो शॉर्ट्स नाटा तो जणा पड़नी कहार इमो शॉर्ट्स देन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विटामिन B1 ठीक अछि विटामिन सी डिजीज द विटामिन सी deficiency रे को डिजीज हबो द डिजीज कॉज्ड बाय द विटामिन सी द डिजीज कॉज्ड बाय द विटामिन सी द डिजीज कॉज्ड बाय द विटामिन सी को डिजीज ऑप्शन दोची को डिजीज कॉज्ड बाय विटामिन सी डेफिशिएंसी रे बेरी केलियोसिस रिकेट्स ना स्कॉर्बे द डिजीज कॉज्ड बाय द विटामिन सी द डिजीज कॉज्ड बाय द विटामिन सी धड़ाधड़ स्कॉर्बे परफेक्ट रेडी आ गोटे क्वेश्चन सपोज हम गोटे एग्जांपल नबा कार नबा हमें आक्सा मुस्कान बिकॉज एबे ताकर रोजा चलथिबो एंड रोजा 40 चालीबा सत्वे लाइव रे जॉइन हिचन तो ताको हमें रेस्पेक्ट देके ताको एग्जांपल नबा आक्सा मुस्कान करो जरी फॉर एग्जांपल आक्सा मुस्कान को छड़ा जीवो सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन आक्सा मुस्कान को छड़ा जीवो टू द पोलर एरिया जदी से प्लेन एरिया रे अछन एंड ताको पोलर एरिया को छड़ा होची देन 3 मास परे ताको जेतबेला आरबीसी को मेजर करा जीवो ताहाले ताको आरबीसी नॉर्मल इंडिविजुअल थारो अधिक रहबो या कम रहबो तो आफ्टर द 3 मंथ्स जदी मुस्कान करो आरबीसी को मेजर करा जीवो एंड से पोलर एरिया रे अछंती ताहाले ताकर आरबीसी कंसंट्रेशन टा बढ़ी थिबो ना कमी थिबो कोन आंसर दैट इज फर्स्ट आंसर कहारो शुभस्मिता दैट इज इंक्रीज द आरबीसी कंसंट्रेशन विल इंक्रीज बढ़िया एंड जो इमीडिएटली जदी तांको छडा जीव एंड सी जो दैट इज शॉर्ट ब्रीथिंग नेबे बा जोर जोर निश्वास नेबे एंड तांकर वोमिटिंग हबो एंड मुंडो बुलेबो ए डिजीज को कोन कहै अल्टीट्यूड सिकनेस परफेक्ट इंक्रीज रेडी दैट इज या इंक्रीज परफेक्ट देन आउ लास्ट तीनटा क्वेश्चन तापरे क्लास को छाड़िया देखो जो माने से जो होमवर्क अछि 16 नंबर एंड 17 नंबर तक करिवो एंड लास्ट तीनटा क्वेश्चन होची फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज द ब्रूनर्स ग्लैंड लोकेटेड इन म्यूकोसा सबम्यूकोसा सेरोसा को लेयर रे ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट अछि एंड ब्रूनर्स ग्लैंड कोठी प्रेजेंट अछि फर्स्ट क्वेश्चन in which layer the Brunner's gland is located तापरे एट लास्ट तीनटा क्वेश्चन नंबर 1 Brunner's gland ता को लेयर रे सेरोसा मुस्कुलरी सबम्यूकोसा म्यूकोसा in which layer of the alimentary canal or which layer of the GI tract the Brunner's gland is located कोन आंसर आ तीनटा क्वेश्चन सरीबो तापरे क्लास एंड प्रियंका Brunner's gland ता कोठी लोकेटेड अछि Where is the Brunner's gland located? Serosa, muscularis, submucosa, mucosa. Submucosa. Biranchi, Narayan, perfect answer. Submucosa. And next question number 2. That is gastrin is a hormone or enzyme? Gastrin is a hormone or enzyme? Kahar answer that is gastrin is a enzyme or hormone. एंड गैस्ट्रिन ता पे कौन सी गोटे स्पेशल एंडोक्राइन ग्लैंड अछि कि जेहेतु हमें जानि जे एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करे हार्मोन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज करे एंजाइम तो जेहेतु गैस्ट्रिन ता गोटे कोन एंजाइम और हार्मोन दैट इज बलराम हार्मोन तो गैस्ट्रिन इज अ हार्मोन एंड इज सिक्रेटेड फ्रॉम वेयर इज द गैस्ट्रिक हार्मोन सिक्रेटेड गैस्ट्रिक हार्मोन ता कोड सिक्रेटेड हुए गैस्ट्रिक हार्मोन ता कोड सिक्रेटेड हुए कोन हो gastric hormone secreted by obviously GI tract रो endocrine cell रू ठीक अछि
तो सरला तुम क्वेश्चन तो नेक्स्ट सेशन रे आमे आनिक आसिया तो ये जो क्वेश्चन गुड़ाक सरी गला डाइजेशन ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन तो सब क्लास रे नुआ नुआ चैप्टर सरिया सत्वे तार पुराना जहाँ जहाँ प्रीवियस क्वेश्चन गुड़ा ताको आमे डिस्कशन करिया एमती नाही कि तुम भूली जीवो ठीक अछि गैस्ट्रिक ग्लैंड ओके तापर बाकी रहिला कोन ना क्वेश्चन नंबर 16 और 17 यार आंसर तुम कमेंट रे जणाओ एंड हैव ए नाइस नाइट एंड गुड नाइट गुड इवनिंग एंड रिकॉर्डिंग क्लास जो माने देखिबे से माने गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून ठीक अछि बाय बाय समस्त को स्मिता क्वेश्चन नंबर 16 और 17 और 16 यही दीटा क्वेश्चन तुम कमेंट करियर अछि तो फर्स्ट प्राइज जहाँ को तो कुआई अनाउंस कराई जय श्रीराम सर जय श्रीराम आउ जो माने तुम सांगसाथी हुंतु किंबा बंधु बांधव कुटुंब जी भी अच्छी जदि दैट इज ओयूट रे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन पई प्रिपरेशन होबा को इंटरेस्टेड पूरा कम प्राइस रे से माने प्रिपरेशन करि परिबे तो माने जानिछो एबे ऑफर भी चली छि दैट इज ऑफलाइन पई 10000 एंड ऑनलाइन पई 8000 आ YouTube क्लास पई किछि पेमेंट नहीं पूरा फ्री बाय सर हैव ए गुड डे थैंक यू विश्वजीत गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट सर प्रीवियस क्लास का कहतु प्रीवियस क्लास मिस्टेक का कहतु को मिस्टेक अक्सा मुस्कान तुमको छड़ाई पोलार एरिया तुम आरबीसी 3 मास पर मेजर करा जिवो एंड तुम आरबीसी बढ़ी जाइथिवो जय श्रीराम स्मिता गुड नाइट एंड तुमरो यूट्यूब लाइव सब बेले तुम 6टा रु 7टा आगुर जो टाइमिंग था 10टा रु 11टा तो सेटा बर्तमान पे चेंज करके 6टा रु 7टा कराई एंड सब बेले तुम विद्यासागर क्लासेस रे यूट्यूब चैनल लाइव क्लास पाइबो बॉटनी जूलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक अच्छी सर नेटवर्क प्रोब्लेम तो हम एमती नेटवर्क कथा सी ना बा नेटवर्क केतबेले प्रोब्लेम हो केतबेले ठीक हो जय श्रीराम बाय बाय पर्टिकुलर टाइम होची ठीक 6टा रु 7टा आ पूरा 6टा रु 6टा एक भी होबनी परफेक्ट 6 रु 7 चलो सर जिम केतबेले जिम बंद